हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कसन करबा सीटीईटी रे किछि आसीथिबा प्रीवियस इंग्लिश पेडागोजी रो क्वेश्चन। सो स्टार्ट करबा। Many minor and tribal languages are not available in school curriculum and the number of speaker is receding in those languages. What is this known as in socio-educational linguistics? तो ए हूँ लैंग्वेज माइनॉरिटी इन एजुकेशन, लैंग्वेज एंडेंजरमेंट, लैंग्वेज रिवाइवल, लैंग्वेज डेथ। सो यार आंसर हूँ लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। सो से भली ए टीचर आस्क्स हर लर्नर्स टू फाइंड वर्ड एंड वर्ड chunk relating to different themes based on the reading lesson. Learners in groups have to make word charts of the same category. What is the strategy is known as? टीचर कौन कर लर्नर को वर्ड फाइंड करके chunk related to different themes based on the reading lesson. Learners in group have to make word charts of the same category. What is this strategy is known as? इस strategy को हमें कौन? So your answer है word collocations. So a student read through an article in a newspaper to get the overall idea of the article. What is the practice known as? गोटे जिनस को आम ओभराली मैं बस टिके ऊपर ऊपर आड़ देखी था गोटे इनफर्मेशन ओभराल इनफर्मेशन पाइबा से स्कानिंग कह जाए आटा को स्टूडेंट थ्रू एन आर्टिकल इन न्यूज पेपर टू गेट द ओभराल आइडिया से ओभराल आइडिया आमको गोटे जिनस देखा आम खोजते ना गोटे जिनस न्यूज पेपर टाइम पढ़ते ओभराल सब जगह जिन जाना स्कानिंग कह जाए। सो डी आंसर साइट वर्ड आर डेवलप्ड by teachers from textbooks, by using words in meaningful context, by knowing meanings of difficult words, by seeing them on sight. Sight words are developed by using words in a meaningful context. जो गोटे context meaningful way रे represent करा जाए ना ताहार बेल बहुत गोटे अधिका तो से sight word develop केते बेले हुए जते बेले हम गोटे meaningful context को यूज करथांते। तो आंसर होची बी। language is a structural form system, a formation of words, rules and meanings, a human system which changes frequently, a rule governed system. Language is a rule governed system. Comprehensible input is as proposed by Krashen 1985 is exposing learners to language somewhat above their level. Exposing learners to language somewhat above their level. Okay, so answer होची A. Extensive reading is reading for facts, reading to write, reading for pleasure and overall understanding of the text, reading in detail every word, idea for deep understanding. So extensive reading ର meaning କେତେବେଳେ ଗୋଟେ reading ଟା ଆମେ pleasurable way ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ନିଜର enjoyment ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ overall idea ପାଇବା ପାଇଁ ସେଟାକୁ ଆମେ extensive reading କୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ deeply ताको देखी था कि पढ़ी था डीपली इनफॉरमेशन पाइबा तो इंटेंसिव रीडिंग कह जोटा रीडिंग इन डिटेल एवरी वर्ड आइडिया फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग एटा को इंटेंसिव रीडिंग कह जाए। एक्सटेंसिव रो आंसर है रीडिंग फॉर प्लेजर एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ए टीचर कीप्स द students work of language use it for assessing the learner's achievement. What is the strategy for assessment known as? So এটা ଗୋଟେ portfolio assessment. डायग्नोस्टिक टेस्ट हम केतेबेले करथांते गोटे पिलार वीकनेस डिफिकल्टी गैप जाना पे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को आम करथांते। सीसी कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन केतेबेले करते होलिस्टिक डेवलपमेंट। समेटिव आसेसमेंट केते गोटे एंड ऑफ द पीरियड जिता हुए आमर पोर्टफोलियो आसेसमेंट हुए कौन ना टीचर कीप्स द स्टूडेंट वर्क ऑफ लैंग्वेज यूजिंग द असेसिंग ऑफ द लर्नर्स जोटा कि आंसर है डी पोर्टफोलियो आसेसमेंट। So a teacher brought real life objects like a hammer, a screwdriver and so on to her class. She asked her learners to describe the objects in 5 to 7 sentences. What are the materials in language teaching known as realia? जोटा को कहे to realia. Mother tongue based multilingualism advocates that learner being their schooling in mother tongue and move on to add many at least 2 languages in school. Learners कौन करवा तार आरंभ करी थाए स्कूल रे जोटा आरंभ है मदर टंग ता मातृभाषा रे स्टार्ट होता है जेतेबेले तार क्लास बढ़े ना मूव टू add at least 2 languages
इन स्कूल सेटा हम मल्टीलिंगुअलिज्म हमको एडवोकेट करा which of the following statement are true of teaching of grammar teaching करियर हम कोटा right statement teaching of rules and the initial stage does not lend much to language learning ଆଉ D ହେଲା କ'ଣ grammar teaching should move from to meaning କ'ଣ टीचिंग प्रथमटा हम ए जोटा कि टीचिंग रूलटा इनिशियल स्टेज रे डज नॉट लेंड मच टू लैंग्वेज लर्निंग बहुत सारे कुन लैंग्वेज लर्निंग को और ग्रामर टीचिंग शुड मूव फ्रॉम टू मीनिंग सो 116 कोड़ा हम ए और डी जोटा कि सी स्टेटमेंट ए एंड डी आर ट्रू ए टीचर draws the attention of learners to individual sound, word, and then sentences. While teaching the listening skill, what approach to listening does the teacher adopt? Bottom up approach माने तळु उपरकु जिबा जोटा कि प्रथमे इंडिविजुअल साउंड आगे गोटे साउंड से लिसन करबो तापर गोटे वर्ड रु देन गोटे सेंटेंस फुल सेंटेंस पर खोजबा जोटा कि बॉटम ऑफ अप्रोच तळु उपरकु जिबा ए टीचर along with her learners writes the name of objects in the classroom like door, blackboard, windows in their mother tongue and in English on pieces of paper and paste them on the objects for learners to notice the word. What is the teacher trying to do? Teacher कौन पाइम कहते the teacher is creating a print language rich environment in the classroom. टीचर गोटे चाहूँगी गोटे एनवायरमेंट को एमती बनवाई जोटे कि लैंग्वेज रिच एनवायरमेंट पिला को बहुत हेल्पफुल हम एमती गोटे एनवायरमेंट बनाऊँ क्लासरूम टाक जोटा कि टीचर लैंग्वेज डेवलपमेंट हेल्पफुल हम दिस इज assumed to be a major difference between language acquisition and learning. Language acquisition happens at an early stage while language learning takes place later. Language acquisition always happens in mother tongue and language learning happens in the second language. Language acquisition meaning from and language learning is making meaning. Meaning formation at a making meaning. Language acquisition is natural and language learning is deliberate and instructed. Language acquisition टा कौन? Language acquisition टा हमको naturally हम जोटा gain करते आम एनवायरमेंट से लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग कौन आमको प्रॉपर जोटा को आमको लर्न करते आम जोटा प्रॉपर आमको टीचिंग दिए लैंग्वेज विषय से लैंग्वेज लर्निंग कहुए इंस्ट्रक्टेड LAC स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम LAC माने LAC फुल फॉर्म स्टैंड फॉर लैंग्वेज एक्रॉस द करिकुलम